welcome to Dafa News presents Sports Tiger Mid-Wicket Live. Mostly you have seen I'm very enthusiastic with my introductions, but not today. Mostly because Virat Kohli, somebody who has given so much to Indian cricket, has played his final game as Royal Challengers Bangalore captain, deserved to win this game, of course, because he has given so much to the franchise. Many have said that he doesn't deserve to be the captain. Many have said that he hasn't given an IPL trophy, but he has given a lot to Indian cricket, and we need to cherish that. And it's a very, very emotional moment for Virat Kohli as well, as he speaks to Ian Bishop in the post-match presentation as well. Very tough for RCB fans as well to be RCB fans, but a great day for Kolkata Knight Riders. What a turnaround this has been for them in phase 2 of Indian T20 League. First making it to the playoffs, of course, and then winning against RCB and going into qualified 2 to, of course, play against Delhi Capitals. To discuss all of it, I, of course, have Ashwin and Monty Paji on the show. अश्विन थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट कहना पड़ेगा. विराट कोहली, I think he is still emotional. His nose is red, his eyes are wet. What do you have to say? No, definitely, Vedant. Like, what an emotional moment. Look at the journey. Look at the number of years he's given to the franchise. आप अगर मेरे ख्याल से even with you or me, if we are part of a setup, any kind of setup, be it Sports Tiger, if you spend so many years and you've contributed so much to the growth of that franchise, क्योंकि आप देखें कहाँ से शुरुआत की थी और कहाँ पहुंची है franchise in terms of just its value, the popularity, and the amazing journey, the ups and downs, and the number of players it's given to IPL as well. Like Chris Gayle ka dekhen, Chris Gayle, and all those amazing personalities that have come out. AB de Villiers, Chris Gayle. This is a squad that's given so much to IPL, and it's given so much entertainment to the fans. Itne saal itne entertain kiya hai fans ko. So of course, you will obviously miss Kohli being around as the captain, because like you said, he's such an important person for Indian cricket as well. So now to see a different face, for RCB, it will be tough for the fans. It will be very, very difficult for the fans to see that. But at the same time, I think it starts a great new chapter. It starts. It's going to be an amazing new sort of leaf that will unfold, and I think I am very excited to see what's in store, what's next, because this is something that we saw maybe with Delhi as well. अगर आप देखें Delhi की भी कैसी जर्नी रही थी, कितने ups and downs आए थे, उतार चढ़ाव कितने देखे, कितने प्लेयर आए, कितने गए, और फिर एक बहुत बड़ा टर्न हुआ दिल्ली में जब एकदम से उन्होंने डिसाइड करा कि अब हम रेंज देंगे श्रेयस अय्यर को. we'll have a new captain, Gautam Gambhir stepped down and a new young person came in. और उसके बाद टर्न अराउंड देखिए पूरे फ्रेंचाइज का कितना जबरदस्त टर्न अराउंड हुआ है, राइट फ्रॉम द प्लेयर्स टू द मैनेजमेंट टू ओनरशिप. So I am only hoping that yes, while it's a beautiful story that's come to an end for Virat Kohli, very unfortunate कि championship नहीं जीत पाए, very unfortunate. I think he's given it all. But अब अगला जो चैप्टर होगा वो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मेरी पूरी ख्वाहिश है और मेरी उम्मीद भी ऐसी है कि जो मैनेजमेंट है कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फेसेस लेके आएगी और हमें एक जबरदस्त चैप्टर देखने को मिलेगा. एंड विल नाउ सी maybe the best of RCB. I think the best of RCB is yet to come. So I think the fans shouldn't get disappointed, because he's just not around as a captain, but he will be around in the camp. So yeah, I don't think the fans should be too disappointed. Absolutely. Big and great words from Ashwin, of course. He will be around, that's for sure. He's just going as a captain, as a player, and as a mentor for the young or the next leader for Bangalore. He will always be there. Monty, before we start our conversation around the Eliminator, your thoughts on Virat Kohli's captaincy and Virat Kohli quitting the captaincy, of course, because this is his final game for Bangalore as a captain. Monty, you are on mute. Yeah, look, sorry. I think Virat Kohli has been a brilliant captain. We've seen some of his best innings as a captain. I think he's had a few years where he's just been unbelievable form in the IPL, and I think his partnership with AB de Villiers is what he'll probably remember fondly. And it's not easy when you're a captain and to perform. But I think for him, captaincy's been brilliant. It's got the best out of him as a player.
he's managed to dictate his terms on the pitch, and also numerous times he's been the top 5 sort of run scorer during the IPL season. So for him personally, his performances have been amazing. I think he's scored over 10,000 IPL runs now. So yeah, look, I think captaincy has really helped his performance and helped him as an individual how to keep being one of the great chasers of the game. Just to correct you, Monty, it was 10,000 T20 runs and not IPL runs, that for sure. But yes, of course, I totally agree to you. Great performance by Virat Kohli, of course, as a captain and as a player for Royal Challengers Bangalore. अश्विन, एक प्लेयर और थे जिनके फेस पे जरूर स्माइल थी, पर पीछे बहुत पेन. मैं बात कर रहा हूँ हर्षल पटेल की. 15 मैचेस, 32 विकेट, बराबर जरूर आ गए हैं ड्वेन ब्रावो के, पर सीजन एंड करना पड़ेगा 32 पे ही. कितना नाराज होंगे वो अपने आप से, ऑफ कोर्स देवदत्त पडिक्कल से. मैं उसी बात पे आ रहा था कि ये तो अब कितने वो निराश हुए या कितने वो काम रहे ऑफ फील्ड जाने के बाद, तब पता चलेगा कि अगर देवदत्त पडिक्कल सही सलामत निकल आए लॉकर रूम से. If Devdutt Padikkal is looking fine, I think he's okay about it. I don't think he's too mad. तो उससे जज कर सकते हैं. बट हाँ, I think कितनी बड़ी उपलब्धि वेदांत, अगर आप देखें कितनी बड़ी उपलब्धि. अगर आप एक प्लेयर अगर इमेजिन करें जो ड्वेन ब्रावो का हाईएस्ट विकेट टेकिंग रिकॉर्ड मैच करे या उसको ओवरटेक ऑलमोस्ट कर ले, आप कभी भी हर्षल पटेल का नाम नहीं सोचेंगे, कभी भी नहीं. एंड स्पेशली जब ये सीजन शुरू हो रहा था, तब तो मतलब हर्षल पटेल को आप शायद भूल भी चुके थे, इसीलिए बड़ी इजीली ट्रेड ऑफ भी हो गए थे. चाहे डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हो, बट स्टिल आईपीएल में यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि ही वुड बी वन ऑफ द लीडिंग विकेट टेकर्स. फॉरगेट he would be matching the all time record. So ऐसे में ये जो उपलब्धि और भी बड़ी हो जाती है कि एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं और आप कितना आप डिलीवर कर गए. एंड दैट इज अगेन ब्यूटी. लाइक समटाइम्स आरसीबी कैन डू दैट. यू हैव सीन सो मेनी प्लेयर्स give some absolutely outstanding performances when they played for RCB. एंड फॉर्चुनेटली हर्षल पटेल के लिए वो वाला सीजन था, एकदम गोल्डन सीजन था, तभी उनका नाम पर्पल पटेल बन गया इस सीजन में, क्योंकि वो कैप उन्होंने बिल्कुल छोड़ी ही नहीं. एंड दैट्स अनदर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि थ्रू आउट वो टॉप पे रहे, बिल्कुल नीचे नहीं आए. और अब तो इतने आगे निकल गए कि शायद अगले मैच में अगर आवेश खान विकेट भी ले लें तो शायद he cannot take over Harshal Patel. So I think he should be very, very proud. I think Harshal Patel should be so proud right now of what he's achieved because nobody was expecting him to give such a performance. और कितने क्रूशल मैचेस में, कितने क्रूशल टाइम्स में, आप ये भी नहीं कह सकते कि he was just coming in the end और टेल एंडर्स की विकेट ले रहे थे. आज भी देखिए कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आए थे पावर प्ले में और आते ही विकेट ले गए और कितना बड़ा ब्रेक थ्रू अपनी टीम को दिलाया. So I think that is where the contribution has really mattered, because it is not just him taking wickets, but see at the crucial points that he has taken wickets, he's brought the team back into the game time and again. And Maxwell and Harshal Patel have been the only reason why today RCB is playing this match today, because of their contribution. So he should be extremely proud. And I can only hope that he sort of becomes bigger as a player in this IPL. I can only hope, and I hope that he stays with RCB. Absolutely. That's my next question to you, Monty, before we actually move to the scorecard, of course. What do you think if the retention policy actually comes into picture ahead of mega auction of IPL 2022 and Bangalore is just allowed to pick 3 players? Who would be those 3 players that Bangalore will be retaining for IPL 2022? Because you have AB de Villiers, you have Harshal Patel, Glenn Maxwell, Virat Kohli, Devdutt Padikkal, the young talent, Yuzvendra Chahar, of course. Who do you think? Look, I think they'll definitely keep Glenn Maxwell. I think he's done really well. But also the combination of, AB de Villiers been in great form. And I think they probably would like another season, of Virat Kohli, AB de Villiers, Glenn Maxwell again. We obviously know under a different leadership. But, we may even see the likes of Virat Kohli. It wouldn't surprise me if Virat Kohli actually just packs his, just says, I want to retire from the IPL. I've got a lot of cricket. I want to focus on winning the World Cup, in India for 2023. And, that's it, I've done my bit, and I think that wouldn't surprise me at all, because what he would want to do now is win that World Cup in 2023 in India. And if it means the workload is less because missing the IPL, he may even do that. बहुत बड़ा स्टेटमेंट ये मोंटी पाजी के द्वारा. और
who knows, something like this also happens. विराट कोहली मोंटी पाजी के हिसाब से शायद रिटायर भी हो सकते हैं. बहुत अनफॉर्चुनेट हो जाएगा सारे विराट कोहली फैंस और आरसीबी फैंस के लिए. बट आई होप कि मोंटी पाजी इनके प्रेडिक्शंस जनरली गलत नहीं जाते हैं. आज होपफुली ऐसा विराट कोहली ना करें. चलिए एक बार नजर डालते हैं ऑफ कोर्स स्कोर कार्ड पे किस तरीके से रही कोलकाता की बल्लेबाजी, क्योंकि बहुत इंप्रेस कर रही है टीम. जब से यूए के अंदर खेलने आई है ऐसा लग रहा है कि कोई दूसरी टीम है. बेहतरीन परफॉर्मेंस टाइम एंड अगेन. शुभमन गिल और वेंकटेश अय्यर, क्या राइट एंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन इनको मिला है. बिल्कुल सारी टीम्स को डिस्टर्ब कर रखा है. शुभमन गिल 29 रन 18 गेंदें एक ऐसे गेम के अंदर जब आप एक लो स्कोर जरूर चेस करें, पर आपकी वो जो एक इंपॉर्टेंट ओपनिंग पार्टनरशिप होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. एक अच्छी इनिंग्स. वेंकटेश अय्यर स्टार्ट मिला, कन्वर्ट नहीं कर पाए. 26 रन 30 गेंदों के अंदर. राहुल चहर 6 रन पे राहुल चहर नहीं, राहुल त्रिपाठी 6 रन पे खेल रहे थे. नॉट आउट दिया था एम्पायर ने, पर विराट कोहली ने लिया एक अच्छा रिव्यू और चहल को मिला अपना पहला विकेट वहां पे. और नीतीश राणा 23 रन 25 गेंदें. सुनील नरीन आई थिंक गेम चेंजिंग इनिंग्स खेली. इन्हें 26 रन बनाए 15 बॉलों में, जहां पे एक बार के लग रहा था कि शायद सारे बैट्समैन को काफी डिफिकल्ट होगा इस पिच पे खेलना. इनने गेंदबाजी भी काफी अच्छी करके दिखाई अश्विन, और बल्लेबाजी उससे भी बेहतर करके दिखाई. इनकी परफॉर्मेंस पे क्या आप बोलना चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने आज बैटिंग करी है नंबर 5 पे, और नंबर 5 पे बैटिंग करी है दिनेश कार्तिक और ओवेन मॉर्गन के आगे. 26 रन 15 गेंदों के अंदर जड़ दिए. 4 ओवर के अंदर 4 विकेट लिए 21 रन देके. और मुझे लग रहा है एक और मैन ऑफ द मैच इनके खाते के अंदर जाने वाला है. सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच हो जाएंगे कोलकाता के लिए एज अ प्लेयर. सही कह रहे हैं वेदांत. अगर अब ये ऐसी परफॉर्मेंस के बाद अगर इनको मैन ऑफ द मैच नहीं दिया तो फिर और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप सुनील नारायण से. तो बिकॉज आई मीन व्हाट मोर कैन यू डू, what more can you do in a 20 over game, and look at the crucial wickets and the crucial runs that he scored, because it's not just about wickets, it's about whose wicket has he taken. Virat Kohli, Glenn Maxwell, AB de Villiers. He's taken out the backbone of RCB जिससे सबसे ज्यादा, and KS Bharat जिन्होंने पिछले गेम जो पिछला मैच जिताया था. So I mean such crucial wickets that he took completely changed the game, and at the point at which he came out to bat, team was sort of about to go in a panic mode में जाने लगे थे, because suddenly लग रहा था कि they're about to lose the plot, they're about to lose the nerves. But this is where experience comes in, Vedant. Look at the experience of Sunil Narayan. See the number of IPL he's played. Look at the championships he's won. He was a part of the team when they were winning the championships. He's been around since forever. इतना T20 क्रिकेट पूरे विश्व में खेल चुके हैं. This is what experience is. This is what we saw in the CSK game with DC. It was a battle of nerves with CSK won. It was the same thing today. It was Narayan who was holding the nerves here, because he's so experienced compared to the young bowling lineup of RCB. So I think although Christian को मैं इतना young नहीं कहूँगा, Christian भी बहुत experienced है, लेकिन फिर भी I think वो pressure में आ गए काफी against Narayan. But yes, I mean it's just brilliant. You see the contribution of Narayan over the years to Kolkata. हम अभी बात कर रहे थे विराट कोहली की कि कितने साल कितना contribute किया उन्होंने अपने franchise में, मगर अगर आप नाम देखें सुनील नारायण का, आंड्रे रसल का, इन्होंने कितने साल कोलकाता के लिए कितना कुछ करा है, कितना कंट्रीब्यूट किया है कोलकाता के लिए. सो आई थिंक सुनील नारायण इज वन ऑफ दोस प्लेयर्स फॉर कोलकाता, लाइक द वे Virat Kohli is for RCB, and I think that's why he keeps getting picked. That's why the franchise keeps putting their faith on him. You know, there are always these one or two players in each squad. अगर आप मुंबई की बात करें तो देखिए पोलार्ड को कितना उन्होंने बैक किया है. Even when Pollard was not doing very well, जब पोलार्ड का फॉर्म बिल्कुल आउट चल रहा था, पर फिर भी फ्रेंचाइज उनको रिटेन कर रही थी. सब सरप्राइज हो रहे थे कि क्यों अभी तक पोलार्ड रिटेन हो रहे हैं. नारायण के साथ भी यही चल रहा था. इतने क्वेश्चन मार्क्स थे कि इज नारायण स्टिल द सेम प्लेयर, उनका फॉर्म नहीं है, विकेट नहीं ले पाते हैं, बॉल टर्न नहीं कर रहे हैं, बैटिंग में भी अब कुछ नहीं करते हैं, तो क्यों मैनेजमेंट खिला रही है, क्यों रिटेन कर रही है. बट सी, दिस इज व्हाट sometimes putting faith on the right cards can do to you, and this is what experienced T20 campaigners can do for you. And also what West Indians I think can do for you. They've always been a game changer in this IPL. So amazing, and I think it was so much. It was a lot of fun to watch today. What Sunil Narayan did completely turned the game around. मजा आ गया. I think kudos to him. Definitely man of the match today. एब्सोल्युटली. अगर इसी तरीके की परफॉर्मेंस बार बार करते रहते हैं तो मुझे लगता है एक बार दरवाजे पे खटखटा देंगे एक बार वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के कि अभी मैं अवेलेबल हूँ
और मेरे को आप T20 वर्ल्ड कप के लिए सेलेक्ट करिए, क्योंकि इन्हीं कंडीशंस के अंदर खेला जाना है। उनकी कट ऑफ कब है वेदांत? उनकी भी कुछ कट ऑफ है क्या जो बार बार शिफ्ट हो रही है? अब 10 से 15 हो गई, अब 15 अक्टूबर हो गई है। बीसीसीआई ने अपनी लिस्ट सबमिट नहीं करी तो 15 अक्टूबर हो गई है डेट। वेस्ट इंडीज की भी एक्सटेंड करा देते हैं कट ऑफ, उनकी भी एक्सटेंड करा देते हैं वेस्ट जितनी इंडीज। भी ग्रुप 12 में जो टीम्स हैं, ये सबको ही बताना चाहूंगा मैं, जितनी भी टीम ग्रुप 12 के अंदर है उनकी डेडलाइन 15 पे शिफ्ट कर दी है। जो क्वालिफायर्स खेल रहे हैं उनकी डेडलाइन 10 अक्टूबर ही रखी गई थी, तो 15 तारीख तक आप अपनी फाइनल टीम सबमिट कर सकते हैं। जितने भी जने हमें देख रहे हैं, 200-250 जने हमें रियल टाइम देख रहे हैं फेसबुक पे, सबसे एक ही रिक्वेस्ट, फटाफट से जाके आप फॉलो कर लीजिए पेज और बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि इस तरीके की इंटरेक्शंस हमारे चलते रहेंगे और इस तरीके की जो हमारी गुफ्तगू है वो जारी रहेगी। मोंटी पाजी, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू। नेक्स्ट गेम कोलकाता इज प्लेइंग अगेंस्ट दिल्ली, and that will be a very, very important game. Probably we can term it as a semi-final. Whoever wins will be playing against Chennai, of course. The loser will go back home. Now, seeing at Kolkata's playing 11 and the kind of squad that they have, in 8 that we see on screen right now, all of them can bat at any number possible, because this is the kind of squad that they have. Is it a sign of worry for Delhi Capitals, or it will be one of the best games we'll be watching in this year's IPL? Well, I look at Kolkata batting order. This is a good batting order on a slow deck, and they've obviously done well here. But Delhi Capitals have got the best bowling lineup, and with Rabada's pace, and it's definitely and it's definitely, I think, Delhi Capitals to win that. I can't see Kolkata. I thought if it were RCB versus Delhi Capitals, maybe a different ball game, because their batting team can play the pace bowling much better. But the likes of Nitish Rana, he doesn't fancy it when it's quick. Rahul Chatrapati, anything quick for him. We've seen it time and time again. These young Indian domestic batters, they don't like it when it's up the sort of chest area coming really quick. This is going to be the key. If they guys can play the pace of Delhi Capitals, then we may have a different result. But I think I'm definitely putting my money on the Mohammed Kaif's team, Delhi Capitals. You are not with Owen Morgan. That's a surprise for everybody who is watching. Well, I'm with Owen Morgan until the semi-final. It depends how he performs. I'm always an Owen Morgan fan. I love him scoring runs. I love the way he hits that big sixes out of the ground, and he may play match-winning innings, and he may do something special. Yes, then I'd like to see Kolkata go through. Absolutely, it will be very interesting. अश्विन से क्वेश्चन पूछने से पहले एक बार नजर डालना चाहेंगे गेंदबाजी पे, किस तरीके की रही गेंदबाजी, क्योंकि इतना ज्यादा डिसअपॉइंट करा नहीं। अगर आप ओवरऑल देखें, मोहम्मद सिराज ने डाले 4 ओवर और 4 बेहतरीन ओवर डाले। एक जो रे ऑफ होप जो साइड दिखाई थी वो शायद सिर्फ इन्होंने ही दिखाई थी। 2 बड़े विकेट एक ही ओवर के अंदर ऑफकोर्स लिया, सुनील नारायण का विकेट और दिनेश कार्तिक को चलता करा। ऐसा लग रहा था कि शायद उस टाइम गेम के अंदर वापस आ गए हैं। 4 ओवर 19 रन 2 विकेट। जॉर्ज गार्टन ने डाले 3 ओवर 29 रन दिए। हर्षल पटेल अनफॉर्चुनेट 2 ही विकेट, इनके आगे 3 लिखे होते अगर देवदत्त पडिक्कल थोड़ी और बेहतर फील्डिंग दिखा देते। युजवेंद्र चहल एक बार फिर अच्छी गेंदबाजी। बार बार बता रहे हैं बीसीसीआई सिलेक्टर्स को कि मैं यूएई में ही हूं, मैं घर की टिकट नहीं कराइए, आप मुझे फटाफट से लीजिए और बायो बबल में इन्वॉल्व कर लीजिए। ग्लेन मैक्सवेल ने डाले 3 ओवर दिए 25 रन, और डैन क्रिश्चियन, जिनने कहना पड़ेगा कि पार्टी स्पॉइलर हो गई ये, और आज रात की पार्टी जो कोलकाता की होगी, अश्विन, इनके पास इनविटेशन जरूर पहुंच जाएगा। बिल्कुल, ये तो उन्होंने हाथ में प्लेटर में उनको केक डाल के दे दिया है डैन क्रिश्चियन को अपने 11 में डाल के, क्योंकि हमने तो कितनी बार क्वेश्चन उठाया था कि डैन क्रिश्चियन कैसे आ रहे हैं इस 11 में, क्योंकि मैं तो इतने सालों से देख रहा हूँ डैन क्रिश्चियन को आईपीएल में, मुझे कभी भी नहीं ऐसा लगा कि वो इतने इम्पैक्ट प्लेयर हैं बैट या बॉल के साथ, बिकॉज उनका रोल एक ऑलराउंडर का है। सी, डैन क्रिश्चियन डज नॉट प्ले इन अ स्क्वाड एज अ प्योर बॉलर। तो जब आप किसी प्लेयर को चूज करते हैं बतौर ऑलराउंडर अपने 11 में, जहां पे जगह बनाना इतना मुश्किल होता है, आईपीएल में प्लेइंग 11 में जगह बनाना बहुत मुश्किल होता है, तो बतौर ऑलराउंडर जब आप आए हैं तो आपको सिर्फ बॉल से कंट्रीब्यूट नहीं करना है, बैट से भी करना है। और मुझे हमेशा लगा है कि आईपीएल में कभी भी डैन क्रिश्चियन उस तरह का इम्पैक्ट नहीं लेके आए, और जिस तरह के प्लेयर्स बेंच पे बैठे थे आरसीबी के,
तो मैं डेफिनेटली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि डैन क्रिश्चियन 11 में आएंगे, बट मैनेजमेंट ने उन्हें बैक करा। कुछ मैचेस में उन्होंने विकेट्स भी ली, बट अनफॉर्चुनेटली जहां पे प्रेशर सिचुएशंस थी, क्रंच सिचुएशंस थी, अनफॉर्चुनेटली वहां डिलीवर नहीं कर पाए। लेकिन आज मैं डैन क्रिश्चियन से ज्यादा मैं बात करना आता हूँ मोहम्मद सिराज की, क्योंकि मोहम्मद सिराज ने आज मुझे याद दिला दी बिल्कुल लॉर्ड्स के टेस्ट मैच की, कि जहां पे एकदम आखिरी मोमेंट पे विकेट चाहिए थे और उन्होंने लगातार एक ही ओवर में जो 2 विकेट निकाले, उससे जो मैच में उन्होंने वापसी करी। बिकॉज मोहम्मद सिराज का भी अगर आप ये पूरा लेग देखें यूएई का, उन्होंने ज्यादा विकेट्स ली नहीं है। ही इज बोल्ड वेल, Right. ही इज बोल्ड इकोनॉमिकली, बट ही इज नॉट टेकन विकेट्स। सो इतनी उम्मीदें थी नहीं जब मोहम्मद सिराज बॉल करने आए, मैं उम्मीद नहीं ले रहा था कि कर नहीं रहा था कि वो विकेट लेंगे, क्योंकि उनका यूएई का लेग ही कुछ इस तरह का रहा है। मगर वो जो एक ओवर में उन्होंने जो 2 ब्रेक थ्रूज लिए, मुझे लगा कि आज कहीं ये लॉर्ड्स का टेस्ट मैच ना बन जाए और ये मैच ही ना खत्म करते हैं आज। So it was brilliant to watch what Mohammad Siraj did. Or even I think Glenn Maxwell today, I think put in a very decent effort with the ball. It's just collectively वो result निकल के नहीं आया, because जो आप lineup देख रहे हैं अपने सामने, जॉर्ज गार्टन हो, डैन क्रिश्चियन हो, ग्लेन मैक्सवेल हो, unfortunately they are not the kind of those wicket taking bowlers that can win you championships. और मैंने ये आरसीबी के बारे में बहुत बार बोला है वेदांत, और आपको तो बोला ही है कि you can win a few games, but if you have to Right. win championships, this is not the squad you want. You can win games, but you can't win championships with a squad like this. जी हाँ, थोड़ा सा दुखी शब्द बिकॉज आरसीबी फैंस के लिए, पर सच जरूर है कि आपके थोड़े परफॉर्मेंसेस, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस जरूर निकल के आते हैं, पर वो एक कलेक्टिव परफॉर्मेंसेस ओवर द इयर्स नहीं मिल के आई है। उस वजह से इस तरीके से एंड करना पड़ता है। एंड कैसा करा विराट कोहली ने, 140 मैचेस में करी कप्तानी, 66 मैचेस जीते, 70 मैचेस वो हारे और 4 मैचेस का रहा नो रिजल्ट। 2016 उनके लिए बेस्ट रहा, फाइनल खेले सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट, अनफॉर्चुनेट वहां पे आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीत पाए। 2017, 2019 और 2020 काफी अच्छे ईयर्स, 4th पोजीशन पे कंप्लीट करा। एंड शायद अपनी पोजीशन से ज्यादा खुश तो नहीं, पर ज्यादा दुखी भी नहीं होना चाहेंगे। एक अच्छी परफॉर्मेंस विराट कोहली के द्वारा, और अगर एक शायद बेटर टीम मिलती और बेटर ग्राउंड मिलता तो शायद इससे बेहतर परफॉर्मेंस ओवरऑल निकल के आती। लेट्स सी द समरी ऑफ द गेम। हाउ डिड द एलिमिनेटर एक्चुअली पैंड आउट? कैसे चालू हुआ, क्या हुआ? जरूर टॉस जीता विराट कोहली ने। टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी का डिसीजन लिया, 138 रन मारे 7 विकेट के नुकसान पे। विराट कोहली टॉप स्कोरर, 39 रन बनाए 33 गेंदों के अंदर। देवदत्त पडिक्कल अनदर ओपनर, 21 रन बनाए 18 गेंदों में। सुनील नारायण स्टार परफॉर्मर ऑफ द डे, 4 विकेट 21 रन 4 ओवर के अंदर। लॉकी फर्गसन एक बार फिर इंप्रेस किया, 2 विकेट लिए 30 रन देके, एंड ऑफ कोर्स 4 ओवर इन्होंने भी डाले। चेस करते हुए 19.4 ओवर्स के अंदर चेस करा। शुभमन गिल एक और ओपनर, 29 रन बनाए 18 गेंदों में, और सुनील नारायण का एक बार नाम वापस, 26 रन बनाए 15 गेंदों में। युजवेंद्र चहल और मोहम्मद सिराज ने लिए 2-2 विकेट, 16 रन और 19 रन दोनों ने दिए। यहाँ पे मोंटी पाजी, द क्वेश्चन व्हिच एक्चुअली कम्स इनटू पिक्चर इज अबाउट द फाइनल ओवर। 4 bowlers or 5 bowlers I think had bowled 4 overs each, or 4 bowlers had bowled 4 overs each. George Garton bowled the penultimate over, bowled 3 overs. Who would you have given the final over? Was it Daniel Christian, or you would have gone with somebody like Glenn Maxwell? Look, I personally would have saved Harshal Patel, to be honest, saved him and got another over out of George Garton. Which he would not been in a position to actually get Daniel Christian to have a bowl. So that's the way I would have gone about it. And unfortunately, they just didn't get enough runs. We shouldn't be talking about the last over or anything like that. They needed another 20 runs, 15 runs more. RCB would have won this game. It's just, I know Sunil Narayan at the end, bowled, well, he basically, took the main wickets, but I'm sure they had a game plan against him. I'm sure they said, look, if it's a slow turning deck, we're not going to give our wickets away to Sunil Narayan. We've lost to one big fella. The other guys, just hang in there. But, it's just, I guess it's, pressure of it. It's pressure of the IPL, isn't it? And it's a shame, I do feel for Virat Kohli a little bit, actually. I'm sure he must be
quite upset, captaining a team for such a long time, not winning a trophy. I'm sure it was his dream to try and get to the final this year. And that's something he may have to assess and think, do I still have the motivation to play IPL when I'm not captain? And that's going to be difficult, because everyone's, players, everyone is always coming to you. You're always feeling you're part of the game. You're making big decisions for other players. You're part of their success. You can see the joy on his face. He absolutely loves seeing other people do so well, and it motivates him to do well. But that's going to be taken away from him. That's basically it's going to be him opening the batting, and then that's it. He's not part of the big decisions anymore. And that's something, it's going to be a different sort of unknown kind of area for him. And that's why I said, he may just think, I may just want to retire from the IPL to focus on the World Cup, that's coming in 2023. I agree to it to some point, of course. Superbly said by Monty Baji. And one more point, Ashwin, which actually makes a lot of sense. George Garton bowled 3 overs. If he would have bowled the 18th over, Harshal Patel bowling the penultimate over, उनको डैनियल क्रिश्चियन को गेंदबाजी देनी ही नहीं पड़ती, क्योंकि आप जॉर्ज गार्टन से एक और ओवर डलवा देते जो आपके लिए प्रॉपर गेंदबाज हैं. ये दिस इज अ वेरी वेरी बिग पॉइंट एंड इट एक्चुअली मेक्स सेंस. नहीं, बिल्कुल. आई थिंक स्ट्रैटेजी थोड़ी सी ये ध्यान में रखनी चाहिए थी कि आपके कितने बॉलर्स के कितने ओवर बचे हुए हैं, बिकॉज आई वुड हैव डेफिनेटली नॉट यूज्ड अप all of my overs for Harshal that early. But again, I think I also agree with what Monty said. Target जब इतना छोटा होता है, आप कितनी देर तक अपने bowlers को बचा सकते हो. So you want your best bowlers to come out early and try and take wickets. I think sometimes that's also one of the things. आप ज़्यादा देर तक hold back नहीं कर पाते हो. So I think it was just them trying very hard to defend a very low total जो हाथ से निकलता जा रहा था. But yes, had George Garton been available for that last over, had the bowling changes been such कि उनके he was not bowling the penultimate over and he could have been bowling the last one, yeah, things could have looked different. Because अगर आप देखें तो ओवेन मॉर्गन का फॉर्म जो है वो कुछ अभी तक मुझे वापस आता हुआ नजर आ नहीं रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा था वो 7 रन भी उनको ऐसा लग रहा था कि उनको 17 रन बनाने हैं उस ओवर में. तो seeing Owen Morgan's form and seeing the nerves of Dinesh Karthik, and I've seen that very often with Dinesh Karthik over the years. वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं. मैं कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं फील करता हूँ जब दिनेश कार्तिक रन सिचुएशन में आते हैं मैच में. वो निदयास ट्रॉफी का अलग ही मोमेंट था एक. आई थिंक उसको अगर मैं साइड में रखूं वो निदयास ट्रॉफी को, उसके अलावा मुझे कभी भी नहीं आज तक लगा कि दिनेश कार्तिक जो है बहुत ही क्रंच सिचुएशंस में ही इज एबल टू होल्ड हिज नर्व्स. So it would have been very interesting to watch how Owen would have faced Garton in the last over, because he was certainly looking very uncomfortable. बहुत uncomfortable नजर आ रहे थे वो, and मैच में प्रेशर काफी बढ़ता जा रहा था. But kudos to Shakib कि आते ही चौका लगा के उन्होंने एकदम प्रेशर रिलीज कर दिया and वहां से they were able to easily win the game. But yeah, these are things we'll never know. You always say in cricket, we'll never know. Absolutely, the things that you will never know. Yeah, Modi, you were saying something. Yeah, look, I think it's been brilliant, just the way we guys all come together for Sports Tiger. It's a great opportunity. So thank you so much for having me on this platform. Always, Monty, it's a pleasure to have you on the platform. Let's go to the final segment of the day, of course, and that is Dafa News presents Best Moment of the Game. Monty, need to start with you on this. What was the best moment of the game? Except for Kolkata winning, of course. Of course. Look, I think there's going to be the obvious moments, but I think Ashwin touched upon again. It was Mohammad Siraj. They could have possibly won that game. But just to give the fans, and sort of the media presenters like ourselves to actually get on the edge of our seats and bring that excitement. It's brilliant to see how Mohammad Siraj just. Took a couple of these explosive wickets. Absolutely. And Ashwin, what about you? What was the Dafa News presents best moment of the game for you? नहीं, मेरे तो डेफिनेटली था ही सिराज के वो जो 2 विकेट्स उस ओवर में. दैट वाज द बिगेस्ट मोमेंट फॉर मी इन द गेम. सच एन एक्साइटिंग मोमेंट दैट वाज इन द गेम. बट अगर मुझे उसके अलावा कोई मोमेंट पिक करना हुआ तो मैं कहूँगा डेफिनेटली नारायण टेकिंग द गेम हेड ऑन. Narayan coming in and completely changing the game with his 3 sixes.
I think that for me was completely old school Narayan. Always the game changer for Kolkata. And especially in the absence of Andre Russell, we're forgetting that Andre Russell is missing in this squad, and they're almost in the final, right? They're just one match away from the final without Andre Russell. Right. So besides Siraj, I think that was such a wonderful moment with Narayan hitting those sixes. Absolutely. Some big moments today. Eliminator done and dusted. Kolkata are through to the qualifier too, and they will be playing against, of course, Delhi Capitals day after tomorrow. जाने से पहले एक बार सबके कमेंट्स पढ़ लेते हैं. काफी सारे कमेंट्स आए हुए हैं. सम्राट राजपूत कह रहे हैं हमें हाय. आंसू लीलवाला कह रहे हैं कि सत सत नमन लाइव करने वालों को. सरीफ भी बोल रहे हैं हेलो. मोहम्मद मिजरान भी कह रहे हैं हेलो. धमपाल कह रहे हैं वेरी गुड. जूर कह रहे हैं थैंक यू. यूसुफ कह रहे हैं चेन्नई जीतेगा इस बार का आईपीएल. भाई देखना होगा. 15 तारीख है डेट, जब पता चलेगा कौन सी टीम जीतती है ये इस साल का इंडियन टी20 लीग. और एक केकेआर के फैन बहुत सारे. आई सपोर्ट केकेआर के फैन बहुत सारे आ रहे हैं. एंड फाइनली कांग्रेट्स टू केकेआर भी काफी सारे कह रहे हैं बहुत बुरा हुआ विराट कोहली के साथ. किंग कह के रो भी रहे हैं थोड़े जने. सुधांशु गुप्ता कह रहे हैं कि दिल्ली जीतेगा आईपीएल 2021. भाई देखना होगा कौन जीतता है. और एक बड़ा स्टेटमेंट बोल रहे हैं. आलम बोल रहे हैं कि 2022 के अंदर विराट कोहली राजस्थान के लिए खेलेंगे. भाई ऐसा नहीं होने वाला है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है. वो बैंगलोर के साथ ही जुड़े रहेंगे. उनके इतने बुरे दिन नहीं आए कि वो राजस्थान के साथ जुड़े. फिर चेत्री पूछ रहे हैं कौन जीता. भाई कोलकाता जीती 4 विकेट से वाला मैच. वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर कोलकाता. एंड लास्ट में हमें कह रहे हैं ग्रेट सर. थैंक यू सो मच एवरीवन जो भी हमारे साथ लाइव में जुड़े हुए थे. थैंक यू सो मच यूजर्स. और जिनको मैं जनरली कहता हूँ स्पोर्ट्स टाइगर फैमिली. आप हैं तो हम हैं. थैंक यू सो मच. आप लोग हमारे साथ जुड़े और आप लोगों के साथ ऐसे ही मुलाकात होती रहेगी. मोंटी पाजी के साथ ऐसी मुलाकात होती रहेगी. अश्विन के साथ ऐसे ही मुलाकात होती रहेगी. आप लोगों से बात करते रहेंगे. See you guys day after tomorrow. A big game coming up. Delhi playing against Kolkata. Whoever wins will meet MS Dhoni, who is waiting like this on the, of course, sofa, the big sofa, to see who comes to meet him. See you guys tomorrow. Have a good night. A big day coming very soon. Till then, have a good night. Take care of yourself and bye-bye. Thanks, Siddharth. Thanks. Thanks. Thank you.